जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात करेंगे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वुमेन एंड एनवायरनमेंट। जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबर इब्न हयान, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्शिमिडस एंड फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन। सो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट मदर ऑफ एनवायरनमेंट एंड मदर ऑफ एनवायरनमेंट साइंस की हम बात करते हैं। और ये यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि एनवायरनमेंट जो है या एनवायरनमेंट मूवमेंट जो है, एनवायरनमेंट साइंस है, इसमें खवातीन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब women have played a very important role in this capacity. So इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे important जो खातून है वो है रेचल कार्सन, and this is her book Silent Spring, which actually changed the world and it started the environmental movement. So let us see about Rachel Carson. Rachel Carson was a student of nature and she usually write about nature. She was born in Pennsylvania. She worked in US Fish and Wildlife Services, primarily as a writer and editor, and her first book was Under the Sea Wind, which was a gripping account of interaction of seabird, fish, and an eel who shared life in an open ocean. And then her second book was Sea Around Us, 1951, which was nothing short of a biography of the sea. So you see, Rachel Carson had a very important relationship with the nature, and she was very close to the nature. And then 1962, her bestseller book Silent Spring came, and this book actually changed the whole world. It started the environmental movement in the world, and that's why I always say Rachel Carson as mother of environment science, because she was very close to the nature. She worked for the nature. And what was actually cause of writing this book? Since after industrialization, there was a lot of industries that were developed in the world, and especially in US, and a lot of pesticide plants were developed. Pesticide factories were being installed, pesticide plants were being installed, and so there was a lot of production of pesticides. And one of the most important pesticide was DDT. When this was sprayed in large areas of land, it killed many birds, it damages the eggshells of many birds, and due to that, the spring of 1962 was silent. There was no singing of the birds in the spring, no chirping of the birds, and therefore the spring was silent. And this made Rachel Carson to write a book on silent spring, and which actually started the environment movement in the world. So therefore, it was a very important role played by Rachel Carson, and I think this is a very good book. And I always suggest my students to please have a read of this book. It's not a big book; it's a very small booklet, around 70 to 80 pages, and it's available online, so you can easily download it in the PDF format. I think it's a must read book. And since after that, since this book of Rachel Carson, Silent Spring, the whole debate of environment started, and again the role of women in particular started as well. So 1970s, an interest in women and their connection with the environment was sparked largely by the book written by Women Roles in Economic Development. The women environment debate started after 1970. In 1975, the world first conference on women, Vandana Shiva introduced the issue of women environment. Vandana Shiva is a very important lady. We'll talk about her in upcoming slides. And then in 1980s, policymakers and the government became more and more mindful of the connection between the environment and the gender issues. And even today, a lot of debate is being done on gender and environment. And in fact, climate change and gender and climate change. So that's also a very important topic, because gender, when you talk about climate change, it always hit the marginal communities. It always hit the poor people, and it always affect women more than the men. So changes begin to made regarding natural resource environment management, and here very important. According to the World Bank 91, women play an essential role in management of natural resources, including soil, forest, energy, often have profound traditional and contemporary knowledge of the natural world around. जो वुमेन है उनका बहुत बड़ा रोल है और उनका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की, या हम जब बात करते हैं ट्रेडिशनल जो रेमेडीज होती हैं, तो वुमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे यहाँ जो है वो बड़ा खवातीन के पास हम यूज अ वर्ड कि घरेलू टोटके होते हैं, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू द नेचर। वो बताती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी है, खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करें या ये टोटके करें। और आप सबको पता है इस हवाले से जुबैदा आपा जो है उनके बहुत बहुत ज्यादा मशहूर थे के टोटके। तो दैट्स अनदर स्टोरी कि हमने उनका मजाक बनाया, वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उनके बहुत से टोटके बहुत आजमूदा थे, इसलिए कि वो बहुत क्लोज टू नेचर है। और इसी तरह जब हम बात करते हैं अपने विलेजेस में जाके, देहात में जाके बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो बुरी खवातीन होती हैं, दादी होती हैं, नानी होती हैं, तो उनके पास बहुत से ट्रेडिशनल वेज होती हैं। दैट इज अगेन बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू द नेचर। इन मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर related domestic food production. Increasing number of women are taking over and expanding their involvement in agriculture task. हम देखते हैं खवातीन हाथों में आज भी खवातीन जो हैं वो
गाय का दूध जो है वो दोती हैं, खवातीन जो है वो गोबर वगैरह साफ करती हैं, खवातीन जो है फसलें काटती हैं। सो देखिए उनका बड़ा बड़ा अहम रोल है। और वुमेन फार्मर जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the agriculture production of the country. One study found that with equal access to resources and services, women could increase yield on the farms by 30%, reducing the need and convert forest into farmland. And then again, if women are involved in water conservation or water management projects, the projects are more 6 to 7 times more efficient. Conservation International की रिपोर्ट है। सो हमें नजर आएगा कि इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। यहाँ पे टर्म जो है इस्तेमाल होती है इकोफेमिनिज्म, और इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि इट ऑलवेज सेज द वुमेन आर मोर क्लोजर टू द नेचर देन मैन। This closeness is towards because there is closeness to why this is closeness is found in the nature or in the women. Women are more nurturing and caring towards the environment. It encompasses a wide variety of views that focus on patriarchal oppression and social construction related to the woman. It all some relates it to the its biology, some other relates to the culture. कुछ लोग इसे biology से relate करते हैं, कुछ इसे culture से relate करते हैं। And you see, ecofeminism believe in the direct connection between oppression of the nature and subordination role of the woman. Khawateen are more close. Khawateen are nurturing just like nature is nurturing. Khawateen जो है women are more loving just like nature is loving. So you see the impact, the feature of love and the feature of nurturing that is both present in the nature and the woman. And let me give you an example. Whenever I teach in the class, I sometimes bring a rose. So मैं गुलाब का फूल लाता हूँ और गुलाब के फूल को मसलता हूँ क्लास में, एक एक पत्ती उसकी तोड़ता हूँ और उसको मसलता हूँ। So whenever I do that, boys sitting in the class, they never show any response. But whenever the girls are sitting, they always give response कि सर ना करें, फूल को मत मसलें, पत्ती कली को मत तोड़ें, मत मसलें। तो एक इनबिल्ट इननेट लव ऑफ नेचर है जो खवातीन के यहाँ या खवातीन के अंदर बिल्ट होता है। घर की सफाई देखें आप तो खवातीन करती हैं, उनको बहुत शौक होता है, घर को सजाने का शौक खवातीन को होता है। ठीक है, कोई भी जानवर अगर आपने पेट पाले हैं तो उसमें भी खवातीन का एक अफेक्शन और बॉन्ड ज्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। होता है मर्दों का, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट अगेन दिस इकोफेमिनिज्म टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म एंड टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम। सो दे इट सेज कि जिस तरह नेचर को मर्द जो है वो प्रेस करता है, सप्रेस करता है, इसी तरह खवातीन तो वो अपने आप को क्लोज फील करती हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया में जो सड़कें डेवलप करते हैं वो मर्द करते हैं, दुनिया में डायनामाइट का इस्तेमाल मर्द करते हैं, दुनिया में बम्स का इस्तेमाल मर्द करते हैं, वॉर्स जितनी हुई हैं मर्दों ने लड़ी हैं। सो डिस्ट्रक्शन उसमें एनवायरनमेंट की होती है। और जो कंजर्वेशन का काम होता है, हम अभी देखेंगे फेमस वुमेन एनवायरमेंटलिस्ट, फेमस वुमेन कंजर्वेशनिस्ट, फेमस वुमेन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट। सो दे आर मोर एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट एक्टिविज्म जो है वो खवातीन नजर आता है। इवन इफ टुडे यू गो ऑन गूगल एंड यू सर्च अबाउट टॉप 10 conservationists or top 10 environmental activists, you will find 8 women among that, and there are only 2 men in that list. So very very important African lady who worked for the environment, who got the first, he was the first African to get Nobel Prize, and that is Wangrai Maathai. In 1970s, he started the Green Belt movement, and this Green Belt movement in Kenya have planted 51 million trees. This Green Belt started by Wangrai Maathai, and she also got a Right Livelihood Award, and she became the first African woman to get a Nobel Prize for her contribution to sustainable development, democracy, and peace. Maathai was also elected Parliament member from 2003 to 2005. So, and this is the woman lady I'm talking about, and a very very important role because 51 million trees planted by the Green Movement she started. And then let us talk about Dr. Jane Goodall. And whenever the name of Dr. Jane Goodall comes, it always comes with Dr. Jane Goodall and chimpanzees. She had a lot of love for the chimpanzees, और बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने chimpanzees के लिए, बहुत ज्यादा काम किया है। Again, she have worked a lot in Gombe National Forest in Africa, and so just we can read here her statement. My mission is to create a world where we can live in harmony with nature. Can I do that alone? No. So there is a whole army of youth that can do. So I suppose my mission is to reach as many young people as I can through my efforts. और बहुत बड़ा रोल है इनका, बहुत कंजर्वेशन पे काम है, बायोडाइवर्सिटी के वाले से बहुत बड़ा रोल है इनका। जूलिया बटरफ्लाई हिल, मैं जब भी बात करता हूँ एनवायरमेंट एक्टिविज्म की, आई नेवर मिस दिस लेडी। यू सी, शी वाज सो मच केयरिंग अबाउट द ट्रीज दैट शी स्पेंड 738 days on one tree. रेडवुड फॉरेस्ट एक जो है जंगल है कैलिफोर्निया में, इट्स अ बिग रेडवुड फॉरेस्ट, एंड शी स्टेड ऑन 180
feet tall tree for almost 738 days that was 1500 years old. उस tree का नाम है Luna, and she said कि Luna को मैं काटने नहीं दूंगी, to prevent it from being cut down by the loggers. So you see the activism of the women. You see how they are close, how when they embrace their love for the nature, they always stick to it, they always stay to that. And now talking about our local subcontinent, Vandana Shiva पहले भी जिक्र किया था, when you're doing the right thing for the earth, she gives you the right company. बहुत बड़ा रोल है इनका क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, फीमेल फार्मर्स के हवाले से बहुत बड़ा रोल है इनका. शी ऑलवेज टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द फीमेल फार्मर्स इन इंडिया. और ये जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी, उनके खिलाफ ये बात करती हैं कि फूड राइट्स, सीड राइट्स जो हैं ये खवातीन या पुअर फार्मर्स का राइट है कि वो कौन से सीड जो हैं वो उगाएं. और because she is a very strong activist of climate change and food security. So बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं इनकी. And she again she is a PhD, so Dr. Vandana Shiva, and very famous in subcontinent. Now let us see again because हम आजकल की बात कर रहे हैं तो important movement जो है chipko movement, which was started again in India. Chipko from the word stick means to stick. चिपक जाना, glue से. Women of the villages resisted embracing trees to prevent their felling to safeguard their lifestyle. उन्होंने हक कर लिया था ट्रीज को और उन्होंने कहा ओवर आवर डेड बॉडी, और हम ट्रीज को काटने नहीं देंगे. डिफोरेस्टेशन could quality alter the lives of the village residents, but it was women who agitated for the saving of the forest. और ये जो इसकी हिस्ट्री है वो स्टार्ट ही हुई थी कि जोधपुर में महाराजा थे, उसने कहा कि मैंने नया पैलेस बिल्ड करना है राजस्थान में, इंडिया में हिमालय के फुटहिल पे. और जब मर्द आए कटने के लिए तो अमृता देवी जो थी, शी हैड वन ऑफ द ट्रीज एंड शी वाज मार्टर्ड. Therefore, they always say martyred Amrita Devi. And this is a pictorial picture of that pictorial diagram. एक उसको जो है represent करने के लिए दी गई. And आज भी उसको celebrate करते हैं. और उसके बाद modern chipko movement started in India in 1970s in Uttar Pradesh, where growing awareness of the rapid deforestation occurred, and the landmark event took place on 26th March 1974, where in Renai village, India, जो है खवातीन ने अपने rights के लिए to reclaim the traditional rights, they again जो है hug the trees and they said we will not allow the contractors of the forest department to let them cut the trees. And by 1980s the movement started all across India and led to the formulation of people sensitive forest policy. और आज हम बात करते हैं community forestry की, और बहुत सी मूवमेंट जो है सोशल फॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं. So इस हवाले से important जो है रोल है खवातीन का हम देखते हैं. और this is again very important role of the chipko movement. And again chipko movement and ecofeminism again मैंने बात की है, they go side by side. Having said this, so women have a very important role in environmental activism and environment. There are a couple of other there are some roles that we all have to need to highlight as well. There's again big debate because अगर हम आज की बात करें, so because women buy more, they are the biggest consumers. So when we talk about consumption patterns, when we talk about consumerism, then there are again women playing a big role, and they are polluting the environment on the large scale as well, because they buy more cosmetics, more clothes, and whenever you buy more you create more waste. So ये जो है कंपोनेंट है, हम बिल्कुल इस कंपोनेंट को हाईलाइट करते हैं कि खवातीन का प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है, खवातीन का मूवमेंट स्टार्ट करने में बहुत रोल है. लेकिन आजकल जो है हम जब देखते हैं बाइंग पैटर्न्स को, जब हम देखते हैं तो खवातीन बहुत ज्यादा बाय करती हैं, और जो इसराफ है उस इसराफ की वजह से एक नेगेटिव रोल भी प्ले किया जाता है. तो सिर्फ ये नहीं है कि खवातीन का एक पॉजिटिव रोल है, दे आल्सो समटाइम्स प्ले नेगेटिव रोल, बट कंजर्वेशन में मूवमेंट स्टार्ट करने में उनका रोल है. देयरफॉर वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट, एंड देयरफॉर आई थिंक कि अगर हम खवातीन को समझाएं, एंड इफ वी टॉक अबाउट दैट, सो वुमेन कैन प्ले अ मेजर रोल इन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म. एंड इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी खवातीन जो है बहुत रोल प्ले कर रही हैं, बहुत ज्यादा वॉइसेस जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं. You know, a Swedish girl who talked about the climate change. Yes, there are a couple of controversies related to her, but still she have taken up this movement. So wrapping up the whole जो हम मैं बात करूं हमारी डिबेट की या जो हम बात कर रहे हैं, so कन्वर्सेशन की, तो उसमें अहम चीज यही है कि women started the environment movement, and women are the torch bearers of environment movement. And I think if they play the role, they can work towards better conservation and preservation. So that is it for today. Inshallah, in next lecture, we will talk about some other topic. Thank you very much.